Roll number 8, please hit the bio button. Yes. Good morning, everyone. Am I audible, sir? Yes. Yes. Good morning, everyone. My name is Nikhil Gaikwad. I am working as assistant professor in Ankushara Topi College, Jalna. My roll number is 8. I welcome all the participants at 16th online faculty induction program organized by Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, and UGC Malviya Mission Teachers Training Center. It is my distinct honor and scholarly privilege to introduce our keynote speaker for this session, Professor Pavnesh Kumar. Professor Pavnesh Kumar is a distinguished academician and administrator with over 23 years of experience in teaching, research, and academic leadership. He completed his MBA from Banaras Hindu University and holds a PhD in rural banking. His core areas of expertise include finance and international business. He has published more than 40 national and international research papers, 3 books, 18 edited volumes, and 20 book chapters. He was the founder, head, and dean of Pandit Madan Mohan Malviya School of Commerce and Management Sciences at Mahatma Gandhi Central University, Bihar. 9 PhD scholars and 2 MPhil students are successfully completed their research under his supervision, and currently 2 students are pursuing their research under his supervision. He has played an important role in organizing over 50 national and international seminars. He has delivered more than 75 expert lectures across the prestigious institutes. He has also led initiatives like Unnat Bharat Abhiyan and Sehat Center. He has also served as a convener for the Public Relations Cell and campus director of Deen Dayal Upadhyay Center at Mahatma Gandhi Central University. Talking about editorial contribution, Professor Kumar is the editor of Mudra, the Journal of Finance and Accounting, and the member of editorial board of Wimmer's Journal. He also served as a board of studies member at several universities, including Siddharth University, Uttar Pradesh, Patliputra University, Patna, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, and BOS of CCS University, Meerut, and DDU Gorakhpur University. Currently, Professor Pavnesh Kumar is serving as a professor at the School of Management Studies at Indira Gandhi National Open University, New Delhi. He is a life member of numerous esteemed professional bodies like Indian Commerce Association, Indian Accounting Association, and Association of Indian Management Schools. I warmly welcome you, sir. Thank you. Over to you, sir. Yes, sir, आपका माइक अनम्यूट कीजिए सर. My voice is audible? Yes, sir. Okay. So first of all, very good morning to all of you, and which I could see there are more than near about 50 participants in this 16th faculty induction program. So delivering lectures to the faculty members, indeed, it is not only a pleasure, but definitely a proud moment for me, and especially taking lecture in the Madan Mohan Malvi Teachers Training Center, because this is the 16th faculty induction program conducted by the MMTTC of Marathwada University, which is located in Maharashtra. And I have a proud privilege of being the resource person. Previously, I have been associated with this center also, and I have delivered. And every time I could find there are the curious and new faculty members taking participation in all these type of programs. That so I am very much thankful to Professor Abdul, and he has been kind enough to invite me on lectures, especially which are related with the Indian knowledge systems and basically IKS in higher education. And there is a demand from several bodies that the name of the IKS need to be changed to the Bharatiya Gyan Parampara. So, and definitely because all of you are very curious, you might be knowing that just 2 or 3 days before, the government
has the funding agency has the IKS division of the Ministry of Education has floated the research projects related with the IKS. You can visit the IKS division of the Ministry of Education. There, just 2 or 3 days before, they have floated one, you can say, proposal. They are inviting the major research projects in this particular area. And you might be knowing, friends, that the new draft proposal for the recruitment of the faculty members, you might be knowing, it is on the UGC website. The API system will be abolished, and there will be 8 criterias, and 8 criterias. Some of the criterias will be related with the patents, whether you have supported in the startup or not. One of the important criteria out of 8 criterias, you have to fulfill the four criterias. Okay, and one of the important criteria will be Indian knowledge system. Either you have edited a book in this area, or you have delivered lectures, or you have prepared courses, or you have developed the online courses like MOOCs on the SWAYAM platforms. So this is going to be an important component in future for selection of the faculty members. Maybe because it is a draft guideline, if it is accepted for the promotion purpose also, if you have attended any seminar or conference which is related with the IKS, will be counted. So because it is a draft guidelines, so I would not like to spare much of the time on discussing on this, but just I was sharing this thought that IKS is going to be an important aspect or important criteria in future for the selection of the faculty members. Another thing is that, friends, we know in most of the state governments, and as per the guideline of the UGC also, as far the course curriculum is concerned, you have to include some portion of IKS in your syllabus. Like, let us assume that somebody is developing a course like economics. So in every unit, or at least 20% of the component should be the should have IKS component of the whole course curriculum. Let us assume there should be some portion of the Arthashastra which has been written by the Chanakya. So you can include that. Number one, you can discuss about the economy in the ancient India. What was the economic status of India? So like that, in all the subjects, like if you are teaching chemistry, even that some portion of the professors who have been in the field of chemistry, their contribution from India has to be there. So if you are teaching accounting, then you can include the accounting methods used by the Marwadis in Rajasthan. So what I want to say here that IKS will be integrated soon in the course curriculum of all the subjects, and the work is going on already. There is lot of discussions, brainstorming, lot of meetings have been held, and soon you will find that the new courses will be floated by the UGC. So now let me come to the topic now. My topic of discussion today is the role of NEP, that is National Education Policy 2020, in reviving Indian knowledge system in higher education. So I will be discussing on this particular topic. So let us see about the national education policy, and it is a matter of proud that the national education policy NEP 2020 has already completed the 5 years. Still, I would say that as far as the implementation part is concerned, everybody is very confused in which way this NEP will be implemented. Some of the areas you might be observing is academic bank of credit, which is slowly implementing in the state universities and central universities, and integration of the IKS. The another thing is flexible entry and exit. And you know that in NEP 2020, the center stage will be the students. It is based on the cafeteria approach.
Once you visit cafeteria, you decides what to purchase. The bouquet is basically decided by you as a buyer. In the same way, the student in the future will decide which subjects to opt. Like a student can go for physics, mathematics, and music, or he or she can take economics also, physics, chemistry, and economics. So the student in future will decide which subjects uh, they want to pursue in graduation and all that. And you might be knowing that graduation will be of 4 years. After that, you can pursue 1 year PG program and directly inducted into the PhD. And even after, if you have graduation with research, if you have earned certain that is graduation with research, you can directly enter into the PhD. Still, I agree with all of you that a lot of clarifications, lot of rules and regulations need to be changed. And you might be knowing that in this winter session, the UGC, AICTE, and the NTC, these have been, they will be abolished, and new regulatory body is coming, and that new regulatory body will decide the rules and regulations for that. So there will be no UGC and AICT in future. Like earlier, we have the Planning Commission of India. Now we have Niti Aayog. In the same way, there will be a separate body looking after the higher education. And friends, because you all are from, most of you are from Mumbai or in Maharashtra, you are aware that already the private universities have entered, private foreign universities, not only private, but foreign universities have entered into the educational landscape of India. Recently, few foreign universities have opened their campuses in Noida, and many, almost 8 to 10, are ready to open their campuses in Mumbai and Bangalore. Okay, so there will be uh, handsome numbers of foreign universities in down the line 10 years. So there will be competition between the government institutions, foreign institutions, and the private institutions from India. So uh, now coming to the topic, that NEP 2020 basically emphasizes holistic education rooted in Indian traditions. What I want to say, that the main mandate of the national education policy is the holistic development of the institution of the students, but the holistic development should be through Indian traditions. Number two, this Indian knowledge system includes ancient sciences, philosophy, arts, and linguistic traditions. I would like to share one information with all of you, that if you know IGNOU, in IGNOU we have MBA courses. Earlier, the MBA courses, the study material which you could find on the website also, there is e-Gyan Kosh. From there, you can download also free of cost the PDF format of the books. So these all MBA materials have been converted into Hindi. The Telugu work is over. Odia work is over. Near Odia work is over. MBA study material in Odia language. And in Marathi, in 22 languages. In next few years, you will find that the all MBA courses will be available in almost all languages which are scheduled languages. Okay, why? What is the purpose? The purpose is that if somebody wants to acquire the knowledge, the language should not be the barrier. If somebody wants to do MBA and interested to do MBA by using the Marathi as a language or Telugu as a language, there should not be any barrier. This is as per NEP 2020 mandate. Third is, higher education institutions are mandated to integrate IKS into curricula. That I have already discussed, that this is mandatory now. The focus is on reviving traditional knowledge systems in modern education, because we as an Indian want to know the glory of India. We have achieved many things. Like, as far as the trade and commerce is concerned, we have been the global leader, and especially in the first CE, Common Era, when
we have our trade, international trade with the Rome and Yunnan, that is Greece. Okay, so at that time, our total contribution in the world trade was near about 28%. Now we are at only 2 to 3%. So this must be known. When we study a subject like international trade, we know that in international trade of India with the rest of the world today, but we don't know what has happened in the BCE, because we know there was Indus Valley civilization, and during the excavation we have found many coins, many terracotta, जिसको हम बोलते हैं terracotta mohurs, okay, stamps. So it means that India has a rich tradition of international trade with the rest of the world, and at that time the balance of payment in first CE common era was not negative, it was positive. Exports are more than imports. And friends, so objective of NEP 2020 in higher education is number one, make education multidisciplinary and holistic, that I have just discussed, that students will be at the center stage, and they will decide that subject which they want to pursue And holistic development here means the physical development, mental development, and the spiritual development of the student. So development should be physical, mental, and spiritual. That is 360-degree development of the students. This is the mandate of NEP. Number two is bridge the gap between the traditional and modern education. Strengthen research in Indian traditions. Just before starting, while starting this lecture, I have discussed that already the projects have been floated by the IKS division of Ministry of Education. So the purpose is to strengthen the research in Indian traditions, encourage flexibility in learning approaches, that is free entry and exit, foster global competitiveness while maintaining cultural roots, and emphasizing experiential learning with an Indian ethos. Friends, you will be agree, as far as Indian traditions are concerned, we used to speak this thing in the society, that vidya dadati vinayam. विद्या से क्या मिलता है? विनय. विनय means vinamrata. But do you think that as our degree level increases, as we pursue graduation, PG, PhD, PDF, do you think that our ego level decreases? You will find most of the times, if the degrees are increasing, the ego of the person is also increasing. You talk to someone who has the PhD degrees, so they will say, and most of the times you will find, if you go through the visiting cards, the people used to write 15 to 20 their degrees on that. It shows their ego. If you write only PhD, that will work. If you write your name, that will work. But there is some fault in our education system, that the people having high degrees have high level of ego. I hope you all of you, it is not 100% applicable, but we are observing in the society. So it is not Vidya Dadati Vinayam. So there is some corrections which are needed in the education system, which is making people, and you will also find that why the person who is very successful at IAS officer, successful IITian, commits suicide. What is the reason? You might be observing that those who are very much educated, they are doing frauds, they are involved in frauds, they are committing suicide. It means there is some moral degradation. There is some moral degradation. So it is the need of the hour that the IKS must be integrated into curricula, because we not only need competent people in the society, we need competent and committed also. Because if you are a competent employee, it's okay. But if you are not committed to your organization, you will do fraud. It means sometime
why lot of discussions are going on in this field, that the 360 degree holistic development of the students is required. Now coming to the defining Indian, also if you define the IKS, this includes the traditional Indian wisdom across disciplines, that is Ayurveda, yoga. And during 2014, when the Modi government came into the center, the International Yoga Day is now, it is a part of the soft power diplomacy of India. This is a gift of India to the world. That is yoga. It is not yoga. Actually, in English, we used to say Rama. It is actually the word yoga. Okay. So this Ayurveda, yoga, astronomy, and mathematics, this Indian wisdom across is found across the disciplines. Indigenous pedagogies and their relevance in modern education. If you see the course curriculum of the MSW students, those who are pursuing the Master of Social Work, they used to conduct the professor used to conduct the field study. The reason being, the students need to be connected with the society, that is experiential learning. Okay, so we need to develop our indigenous pedagogies. IKS as an alternative knowledge framework alongside Western paradigms. When we want to integrate the IKS into the course curriculum, it doesn't means that we are discarding the Western paradigms. We want to grow, but there need to be a calibration of IKS with the course curriculum along with the Western paradigms. So there are role of oral traditions and ancient manuscripts in knowledge preservation. So already uh, the government is funding lot of research institutions to document the oral traditions. Like there are in scheduled tribes, you will find in ST, they know many medicines, but they are not documented. So government is funding that oral traditions, and they are very useful also. So government is trying to fund all these oral traditions and ancient manuscripts in order to preserve the knowledge. Why IKS matters, friends? Why reviving IKS matters? The first one is cultural identity and self-reliance, because we want to rely. And if you have gone through a case recently on 3rd of January, do you know that the Venezuela, just I am sharing this information, they have lot of money, but they didn't diversify their economy. They were dependent on their oil reserves. That's why this incident happened. This is my view. Maybe it may be different, but the self-reliance is very important. And until unless your cultural identity, you are not concerned about your cultural identity, it will be a problem in future. So cultural identity and self-reliance is one of the area for which the IKS matters. Contribution to the global knowledge, because India has used Buddha, not youth. Means we have never captured the countries outside. We have ruled on the heart of the people, and you will find these things in the manuscripts also, in the other areas also. The India has and you will be surprised to know that the Buddhism is not much flourished in India, but it is in Japan, it is in China, it is in other countries. So this is the contribution of India to the world outside. So this is contribution to the global knowledge. We have Kanad, we have Chanakya, we have Shushut. So this all these great we have Kalidas. So they have great contribution to global knowledge. Addressing contemporary challenges with the indigenous wisdom. So we want to face to the contemporary challenges, but with our indigenous wisdom. And next is enhancing India's soft power through knowledge exports.
India is a knowledge-driven economy. We know that we have youth power, we have demographic dividend. So we want to grow, but we want to grow by exporting the knowledge. We have this IKS will matter in that case. Sustainable solutions inspired by traditional knowledge. Friends, we know that uh, instead of sustainable production, the Indian traditions believe more on the sustainable consumption. That's why you will find in most of the home, we used to give the first chapati prepared to the Go Mata, to the cow. We take care of the last one is kept for the dogs. We used to share what we consume with the not only with the animals, with the society also. To sustainable consumption, the sustainable solution, we used to give sustainable solutions to the world, because the Western model of development has failed, and that's why the new subjects like sustainable development have been introduced in the course curriculum. Earlier there was globalization, and when globalization came, it came with a lot of the problems, and that's why we are discussing about the net zero till 2070. We want to achieve net zero till 2070 by concentrating more on the non-renewable energies, by reducing the carbon footprints. So sustainable solutions are basically can be drawn from the Indian knowledge systems. So revival of the regional knowledge traditions. So this is the reason why IKS matters. Friends, NEP 2020 NEP 2020 provisions for IKS integration is that it emphasizes on ancient literature and philosophical texts. And when we talk about, friends, Indian knowledge system, it includes the text of not only the Sanatan Dharma, but also the learnings from the Buddhism, learning from the Sikhism, learning from the Jainism. And we know that the Ahimsa, which is the core of the Buddhism and Jainism and Sanatan Dharma and Sikhism also, it is it becomes the center of any policy making. And this experiment was done by the Gandhi also, Satya and Ahimsa. So the emphasis on the ancient literature. When we talk about the ancient literature, it includes Vedas, and you might be knowing that there are four Vedas. They become the part of the ancient literature. There are Purans, there are Tripitaks, there are Agam in the Jainism, there is Guru Granth Sahib, and Jatak Kathaएं. All these Jatak tales, these all become part of the ancient literature. Establishment of indigenous knowledge hubs in universities. Already in you will find in few universities already IKS division have been the Center for Indian Knowledge System has been established in few universities in India. And the purpose is to conduct research, seminars, conferences um, uh, on these topics related with IKS. Promotion of Sanskrit and regional language. And we know, friends, that Sanskrit is known as Devwadi. Yeah. If there is any question, you may ask. Yes. Is there any question? Otherwise, you may go through the presentation. In last, I will spare 10 to 15 minutes for question and answer. So promotion of Sanskrit and regional languages, that I have discussed that. And these regional languages is the family of Indian language. You can say Indian language family. So the Telugu, Marathi, these are all Indian languages. Instead of saying them regional languages, these are Indian languages. Now, creation of research centers and IKS focused universities and multidisciplinary approach to education. So, NEP 2020, these are the provisions for IKS integration. Yeah. Now, coming to the role of what will be the role of
higher education institutions, the number one is establishment of IKS research centers. They can establish. Number two, incorporating IKS courses in curricula. That I have already discussed that in most of the state universities, the committees have been constituted, and this work is going on at the UGC level also. Partnering with the traditional knowledge practitioners. That's why, can any one of you can share this information, how the traditional knowledge practitioners are integrated into the higher education system at present? कोई इसमें ये बता सकता है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको यूनिवर्सिटी सिस्टम में लाने के लिए क्या प्रोविजंस हैं, जिनके पास डिग्री नहीं, जिनके पास सिर्फ नॉलेज है? एनीवन ऑफ यू? देयर इज Can I speak, sir? हाँ, यू कैन स्पीक। या सर, हम उन्हें एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एज ए गाइडेंस के तौर पे उन जो भी एक्सपर्टीज है उनका फायदा ले सकते हैं? नहीं, ये आप ठीक बोल रहे हो, ये तो शुरू से है, लेकिन अब एक प्रोविजन है। वो Okay. प्रोविजन है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इसको आप लोग Okay. सर्च करिएगा गूगल में, Yes, sir. प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को एक हैंडसम अमाउंट मिलता है, नियर अबाउट मैं कह सकता हूँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए के करीब मिलता है। प्रोफेसर का जो बेसिक है वो तो 1,44,000 है, आप सभी लोगों को मालूम है, लेवल 14 में। तो उनको 1,50,000 एंड अबव मिलता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि उनके पास पीएचडी हो, ये जरूरी नहीं है कि उनके पास पीजी डिग्री हो, लेकिन लेट अस अज्यूम कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई आईएएस है, कोई कंपनी में जो है वो सीएमडी रहा है, और ग्रेजुएशन करके भी सीएमडी बन सकते हैं, लेकिन उसके पास हाइड्रो एनर्जी पे बहुत अच्छा नॉलेज है, वो प्रैक्टिशनर है। या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है बहुत अच्छा, या कोई अच्छा गाना गाता है, या मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर हैं, वो अच्छा क्रिकेट जानते हैं, लेकिन उनके पास तो ऐसा नहीं है, पीएचडी का डिग्री नहीं है, ऑनररी डिग्री होगा, तो उनको भी आज की डेट में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंट कर सकते हैं एज पर दी यूजीसी गाइडलाइंस, और उनकी सेवाओं को लिया जा सकता है। तो ये तो पहला स्टेप है जिसमें जो डिग्री और जिनके पास डिग्री नहीं है, दोनों को ही एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए। और मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे, बिकॉज लेट अस अज्यूम कि समबडी इज टीचिंग बैंकिंग सब्जेक्ट, कोई बैंकिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और देयर इज ए रिटायर्ड जीएम और सीएमडी फ्रॉम ए बैंक, लेट अस अज्यूम फ्रॉम द सम नेशनलाइज्ड बैंक, रिटायर्ड सीएमडी। if he is given opportunity, see there is a problem with the person in industry। क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जो है जिस रोल में प्ले करता है उस रोल को ही बहुत डेप्थ में देखता है। जैसे मान लीजिए मैं बैंक में हूं, मैं जो है डेट डील कर रहा हूं, डेट रिकवरी को, और पूरे लाइफ लॉन्ग में डेट रिकवरी में रहा, जिसको बोलते हैं ऋण वसूली में, तो मुझे उस एरिया की बहुत नॉलेज होगी। और जो प्रोफेसर होता है वो एक तरीके से आप मान के चलो कि एरोप्लेन में बैठा है, वो सभी चीजों को देखता है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डेट रिकवरी में, क्या क्या कागज यूज होते हैं, क्या क्या पेपर्स होते हैं। तो इन दैट केस अगर ये दोनों लोग जाते हैं वहां पे क्लास में, एक तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं दे विल गेट इनसाइट्स, theoretical insights also and practical insights also. So the role of higher education institutions may be to offer some professor of practice to someone who is practical oriented. So in that way the teaching learning process जो है वो enrich हो जाता है। And next one is incorporating IS courses in curricula that I have already discussed. So this may be the role of higher education institutions in IKS. So what may be the implementation strategies for IKS in HEIs? So first is curriculum development with IKS elements. Is one of you have been involved in this process? कोई आप में से कोई इस चीज में इन्वॉल्व रहा है? क्योंकि जो हम लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज कंडक्ट करते हैं, स्कूल बोर्ड करते हैं, एकेडमिक काउंसिल है, क्योंकि फर्स्ट जो बॉडी है जहां पे कोर्स करिकुलम को अप्रूव किया जाता है वो है बोर्ड ऑफ स्टडीज। क्या किसी ने आईकेएस एलिमेंट को इंक्लूड किया अपने कोर्स करिकुलम में? नहीं तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा आपसे। आप लोगों में से किसी ने किया है? मैं देख नहीं पा रहा आप लोगों को, मतलब हाँ ना में भी जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर।
जी। तो जो, हाँ बताएं। यस सर, हमने किया है। एक्चुअली हमारा डोमेन मास कम्युनिकेशन है, और हाँ, हमने 2 क्रेडिट में आईकेएस का पेपर जो इस साल नेक्स्ट मतलब ऑनगोइंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, मैं आप लोगों को मेरा, मैं ठीक है, अच्छा मला टाइम टेबल घ्यायचं होतं सेकंड चलिए, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। अभी मैंने एक बीबीए, संदीप जी अपने को अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, संदीप कोटकर जी, संदीप कोटकर जी प्लीज अनम्यूट म्यूट योर सेल्फ। सेकंड फ्लोर ना। सेकंड फ्लोर में जाएंगे ना, फिर अपने नहीं, सीसीएफ है, हाँ सीसीएफ सीसी के सामने रास्ता है, संदीप जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। डायनेमिक्स सीसीएफ के साथ बोल रहा हूँ। सीसीएफ सो क्या बोल हाँ, संदीप, डॉक्टर संदीप प्लीज म्यूट योर सेल्फ थोड़ा सा। सो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी हम लोगों ने एक बैंकिंग का कोर्स डेवलप किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, बैंकिंग फाइनेंस ऐसा कोर्स था, जिसमें हमने हर यूनिट में एक एनईपी टॉक्स अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। डू यू नो कि बच्चों को जो हम काम देके, जैसे हम लोग आजकल डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, जिसमें जो मर्चेंट्स हैं वो डिजिटल यूपीआई यूज कर रहे हैं, ये वो, तो हमने उनको एक कोर्स में डाला। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की पहले बात कर रहा हूँ कि हमने उस यूनिट में डाला कि व्हाट इज डिजिटल बैंक, ये पेमेंट बैंक्स टाइप्स क्या है, ये वो सब डाल के फिर हमने उसमें लिखा, उस यूनिट में एक एक्टिविटी दिया उनको। द एक्टिविटी वाज कि स्टूडेंट इज सपोज टू visit the nearby market. There they have to identify 5 merchants. Those merchants, maybe वो सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है, those who are not using the UPI or any other digital payment platforms, उनको ओपन कराना है। उन क्यों नहीं यूज कर रहे थे ये पता लगाना है, उनका ओपन करा के आना है, उनको सिखा के आना है, और वो रिपोर्ट आके सबमिट करनी है। दे हैव टू सबमिट दैट रिपोर्ट। तो क्या हुआ, उन्होंने पढ़ा और उसका जाके असाइनमेंट भी वो सबमिट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, व्हेन वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग, तो हम लोगों ने कहा कि बैंकिंग में सबसे पहले जो मारवाड़ी, जो पहले पहले तो बैंक्स होते नहीं थे इंडिया में, क्योंकि बैंक तो आपका जो इंपीरियल बैंक्स थे पहले, बाद में जो बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता बैंक, उससे पहले जो महाजन्स थे और जो साहूकार थे, दे हैव बीन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। और ये अभी से नहीं है। इफ यू नो द हिस्ट्री, एट द टाइम ऑफ बुद्धा आल्सो, अनाथ पिंडक वाज देयर हु हैज बीन फंडिंग मैनी, वो लोग फंड करते थे ऐसी चीजों को, बहुत सारे ऐसे व्यापारी रहे हैं अपने। गिरीश गिरीश सर तो अतुल इन दैट केस हम लोगों ने इंक्लूड किया कि बैंकिंग इन एंशियंट इंडिया, फ्यू ग्लिम्सेस, कि कुछ कुछ ग्लिम्स देना बच्चों की कैसे बैंकिंग होती थी। तो उस टाइम का हम लोग कि ऐसा बैंक था, ऐसे ट्रेडिंग होती थी, साहूकार ऐसे थे, ये प्रॉब्लम्स थी, इन चीज को इंक्लूड किया। और इसके साथ साथ हमने शुरू में ये कहा कि जो ट्रेड है, उसमें ट्रेड भी एक पार्ट था, कि ट्रेड ऑफ इंडिया विथ रोम एंड ग्रीस, इसको इंक्लूड किया, ताकि लोगों को ये पता चले कि रोम के साथ कैसा व्यापार होता था भारत का, ग्रीस के साथ कैसे होता था। और वो एक, आप इफ माइट बी नोइंग सिल्क रूट, हमने उसको भी इंक्लूड किया उसमें, थोड़ा सिल्क रूट के बारे में भी स्टूडेंट को पता चले, क्योंकि आज के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सब सिल्क रूट के नाम है लेकिन पार्ट, और नहीं कोई आदमी है ना, ये चीजें। तो ये चीज हमने इंक्लूड किया करिकुलम टाइम टेबल है आपके पास डेवलपमेंट। सेकंड ईयर बीटेक नंबर 2 इज फैकल्टी ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल नॉलेज डोमेन। संदीप जी प्लीज मेरा म्यूट सब्जेक्ट है योरसेल्फ। उसमें तो दैट इज संदीप सं, मिस्ट्री मैकेनिकल यस वाई मैकेनिकल तो सॉरी आई हैव, हाँ ठीक, ओके। नाउ फैकल्टी ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल नॉलेज डोमेन्स, सो दैट वी हैव डिस्कस सेटिंग अप आईकेएस चेयर्स एंड डिपार्टमेंट्स, integration of IKS in national and international conferences. So a lot of conferences are now holding, and those who are part of the commerce and management, those who are part of commerce and management, we are conducting
a specialized faculty development program in the Gujarat University from 2nd February to 8th of February, conducted by the MMTTC Gujarat University. Those who are from commerce and management, they can participate. It is free of cost. There will be no accommodation charges. Okay. So I will share this brochure with your coordinator. You can participate, and there we are going to conduct a workshop how to integrate this IKS in the commerce and management area. Institutional collaboration with Gurukuls and heritage knowledge centers, and digitization of manuscripts and traditional text for wider accessibility. So can any one of you name the project of the government of India where the government of India is funding for digitization of manuscripts? कोई बता सकता है? कि बहुत बड़ा ये जो है ये काम है, इसको आप लोग पढ़िएगा। बहुत एक अच्छा खासा फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए। ठीक है, उसको एक बार आप लोग देखिए कौन सा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड इफ यू वांट यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी आल्सो। नाउ कमिंग टू द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ IKS, multidisciplinary approach. Number one is it is related with the combining of IKS with STEM disciplines. So that is science, technology, engineering, mathematics. You might be knowing this is the full form of STEM. So blending ancient wisdom with the modern innovations that we have discussed. Case studies of successful integration is in HEIs. आप लोगों में से कोई इसमें कॉमर्स मैनेजमेंट का है? अधिकतर जो लोग केस स्टडी मेथड, क्योंकि साइकोलॉजी में भी होता है, और ज्यादातर अगर आप लोग कॉमर्स मैनेजमेंट के हैं तो आपको मालूम है कि जो केस स्टडीज हैं नॉर्मली जितनी भी बुक्स हैं, जैसे अगर मैनेजमेंट में कोई यहाँ पे नाम लेगा तो उसको मैं पूछूंगा मार्केटिंग की आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, वो तुरंत नाम लेगा फिलिप कोटलर का, जिसमें केस स्टडीज अधिकतर फॉरेन की होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, वी नीड टू डेवलप द केस स्टडी, सक्सेसफुल केस स्टडीज, जैसे मान लीजिए अमूल का केस स्टडी है, पेटीएम है, ये दे शुड गो इनटू दी कोर्स करिकुलम, कि बच्चों को ये पता चले। कोई इसमें से ये बता सकता है जो लोग अटेंड कर रहे हैं कि केस स्टडी मेथड किस डिसिप्लिन से कॉमर्स मैनेजमेंट या अदर डिसिप्लिन में गया है? कैन एनीवन ऑफ यू? ये पेडागॉगी है, इट इज अ टीचिंग पेडागॉगी केस स्टडी मेथड। ये किस डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में आया? ओरिजिनली किस डिसिप्लिन का पार्ट है ये? सर आई थिंक सोशल साइंसेस। नहीं, केस स्टडी मेथड बेसिकली मेडिकल साइंस का है और उसको दूसरे डिसिप्लिन्स में इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, यू आर ए केस फॉर ए डॉक्टर। क्या आपको और आपके बच्चे को, दोनों लोगों को फीवर है, तो क्या दोनों को एक ही दवा देता है क्या डॉक्टर? नहीं, वो क्या करता है, आपका एज देखेगा, आपका लाइफ, आपका जो हिस्ट्री है उसको देखेगा, हेल्थ हिस्ट्री जो है, आपका बॉडी मास इंडेक्स देखेगा, ब्लड प्रेशर देखेगा, आपको वही दवा, अगर वो क्रोसिन आपको एक देगा तो आपके बच्चे को बोलेगा कि 1/4 ले लो या हाफ दे दो इसको। ये डिपेंड करता है केस टू केस, वन मेडिसिन फिट टू ऑल नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर ए डॉक्टर पेशेंट इज ए केस। इन द सेम वे, चाहे वो साइकोलॉजी हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, उसमें जो और हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है। तो ये चीज वहां से लेके आया गया मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेज में। और केस में देयर इज नो परफेक्ट सॉल्यूशन कि यही सॉल्यूशन होगा इसका, ऐसा नहीं होता है। जैसे दो लोगों के डाइवोर्स हुआ, दो लोगों के बीच में, और 100 डाइवोर्स के केसेस हैं, तो सबका एक ही रीजन और एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा। सोशल साइंसेज में उसका हिस्ट्री देखा जाएगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर मेरे कहने का मतलब है कि केस स्टडी मेथड वहां यूज होता है जहां पे ये नहीं माना जाता है कि यही सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और हर केस को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आज, जैसे अगर कोई एक सोशलॉजी का यहाँ पे बंदा बैठा हो और फॉरेन का जो सोशलॉजिस्ट है उसने कुछ लिखा है, क्या इंडियन फैमिली सिस्टम और फॉरेन वेस्टर्न फैमिली सिस्टम एक ही है? क्या हमारे यहाँ की पारिवारिक संरचना और विदेशों की पारिवारिक संरचना एक है? क्या जो वहां पे सॉल्यूशंस होते हैं वही सॉल्यूशंस इंडिया में भी लगेंगे? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इंडिया इज ए यूनिक कंट्री,
इंडियन जो सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो अलग है, और यहाँ के प्रॉब्लम्स के लिए, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए इंडिया सेंट्रिक सॉल्यूशंस ही चलते हैं। ठीक है, तो इट मींस द हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो स्पेक्स लगा रहे हैं हम, वो स्पेक्स इंडियन स्पेक्स हो, उससे हम उन प्रॉब्लम्स को देखें और उनको सॉल्व करें। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग IKS एप्लीकेशन इन सोशल साइंसेज दैट आई हैव डिस्कस्ड, क्रिएटिंग हाइब्रिड कोर्सेज इंटीग्रेटिंग फिलॉसफी, एथिक्स एंड साइंस। फ्रेंड्स, this is a very important topic because do you know a company like सत्यम का नाम आप लोग जानते हैं? सत्यम कंप्यूटर्स पहले बहुत ही रिनाउड कंपनी थी, लेकिन एकाएक वो फेल्योर हो गई, बंद हो गई। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सक्सेस करती हैं, लेकिन डू यू थिंक दैट कि जो उसमें CFO होते हैं, जिसको हम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन वहां इशू होता है इथिकल इशू। ओके, जल्दी पैसा कमाना, जल्दी करना। तो इसका मतलब है कि आज की डेट में, और साइंस में भी तो यही बात है ना, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं कि लैब्स जो हैं, वर्चुअल लैब्स का यूज करिए, ये करिए, वो करिए। तो एथिक्स है, और इथिकल कमिटीज होती हैं। जो लोग साइंस के लोग हैं इसमें, वो जानते हैं कि एथिक्स के लिए कमिटी होती है हर यूनिवर्सिटी में, खास तौर से जो है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, साइंस की फील्ड्स के लिए। तो एथिक्स इन रिसर्च, और आज की डेट में PhD में इथिक्स इन रिसर्च करके एक अलग से UGC ने मैंडेटरी किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ethics must be integrated with the science and other disciplines also. Now coming to the IKS and new teaching pedagogies, क्या है? गुरुकुल सिस्टम इंस्पायरिंग फॉर मॉडर्न टीचिंग। अब गुरुकुल सिस्टम क्या है? आज की डेट में जो बोर्डिंग सिस्टम है उसी को आप गुरुकुल सिस्टम मान लो, जहां पे लोग हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। तो लेकिन इन गुरुकुल सिस्टम जो मेन चीज है, जो टीचर एंड टॉट, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है फ्रेंड्स, ये डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ दो लोगों में। और ये यहाँ पे जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट से तो गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, लेकिन इफ देयर इज एनी ट्रस्ट डेफिसिट दो लोगों के बीच में, टीचर और टाट के बीच में, तो वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज कभी भी अच्छे से नहीं चलता है। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा जो डेफिसिट है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये जरूरी है कि जो टीचर एंड टॉट है उनके बीच में इसको डेवलप किया जाए, जो हम बोलते हैं ट्रस्ट सरप्लस होना चाहिए, ट्रस्ट का डेफिसिट नहीं होना चाहिए। सो गुरुकुल सिस्टम इज द सॉल्यूशन, जहां पे स्टूडेंट जो है, और आई विल always used to say this in my lectures, that teacher need to be friendly with the students, not friend. जहां पे स्टूडेंट टीचर फ्रेंड बन जाता है स्टूडेंट का, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम विच स्टार्ट्स इन एजुकेशन सिस्टम इज कि जब ये टीचर सोचता है कि मुझे सबसे अच्छा टीचर माना जाए, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहां से कंपटीशन शुरू हो जाता है टीचर्स के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गुरुकुल सिस्टम एथिक्स बेस्ड, जहां पे ट्रस्ट जो बैलेंसिंग हो टीचर एंड टॉट में, दैट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल एंड प्रॉब्लम based learning from traditional methods. Friends, I would like to share one thing, that I know many BTech students जिनको घर का एक छोटा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और बल्ब जो है वो न जले, तो वो बीटेक किए हैं लेकिन छोटा सा सॉल्यूशन भी नहीं करते। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अपने घर में नहीं लागू। मैं आई हैव सीन मेनी टीचर्स हु आर टीचिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बट देयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट ओके। जो चीज है, जो लोग मैंने देखा है कि जो लोग सोशलॉजी में जो चीजें पढ़ा रहे हैं, उनका खुद का सोसाइटी में रिलेशन अच्छा नहीं है। जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, और जो हम अप्लाई करते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। दैट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग, इट इज माई नॉट माई ऑब्जर्वेशन ओनली, इट मे बी योर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, मे बी। So role of storytelling and oral traditions in education. Friends, in our school age, we know we have learned many things through storytelling. One of the teaching pedagogy may be the storytelling. कभी भी कहानी के माध्यम से कोई चीज याद करना बहुत आसान होता है, और आज की डेट में ये टीचिंग पेडागॉजी बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो टीचिंग स्टोरी के माध्यम से बताना एक अच्छा
ट्रेडिशन हो सकता है, एक अच्छा पेडागॉगी हो सकती है, और practical application of ancient teaching methodologies. So next one is research and development in IKS. First is funding initiatives for IKS research, that I have just shared that the IKS division of Ministry of Education has already floated the projects where you can apply. So there is a separate body to fund it. It is available on the website also. Collaboration with the we can collaborate with the global institutions. There are various global funding agencies. They are ready to collaborate on the issues like IKS. Digitization of ancient text and knowledge repositories that I have discussed. Please search for that. Which project is going on for digitization of ancient text. It is a big project, and this project has been announced in the recent budget, last year budget, which has been introduced by this government. Connecting IKS with the sustainable development goals. So ultimately, friends, we know the sustainable development is basically related with the future generations. Okay, so it is not only we having right over the resources of the mother earth, but the future generations must be taken care of. So it is the need of the hour to connect IKS with the SDG goals. And definitely you might be knowing what is the last year at which we want the world is required to achieve the targets, SDG goals. There are SDG 1, SDG 2, 17, 18. These are the various SDG goals. So what is the last target in which year we have to achieve all these goals? That's why increasing the enrollment ratio, giving health facilities in the form of the Ayushman Bharat, these all initiatives are going on by the government at the center, at the state level also. It is 2030. We have only 5 years left, and we want to achieve this SDG goal. It is not only we as a country, but the world at the large also. Development of new research methodology rooted in IKS and encouraging PhD and postdoctoral research in traditional disciplines. Now coming to the role of language in IKS reservation. So first is Sanskrit, Prakrit and regional languages in academia, and already this is there. And recently the Sanskrit University has been upgraded to the Central Sanskrit University now. So we have Central Sanskrit University for preservation of this and dissemination of knowledge in Sanskrit. Number 2 is importance of vernacular languages in knowledge dissemination. So vernacular languages are very important because at the regional level, peoples do not understand the global languages. So vernacular languages are also very important for the knowledge dissemination, because ultimately dissemination of knowledge is important rather than the language. And we have a colonial mind that if somebody is speaking in English, he or she is very talented or his IQ level is very high. This is the perception in the society, but that is not the case. The knowledge cannot be bind in a particular language. AI and digital tools for language preservation can be used. And how many of you know the Anuvadini tool of AICTE? Do you know something about the Anuvadini? There is a AI tool, artificial intelligence tool, that is Anuvadini. It used to translate the text in different languages. Already it have been developed by the AICTE, where you can directly translate the books if you have PDF. So the reason being why it has been developed, that the knowledge in a particular language must be disseminated in other languages to the local people also, to the people in the other states also. So we can use the AI digital tools. Friends, do you think that in future the competition will be between two parties? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार जरा बोल देंगे, क्योंकि मेरा नेट का इशू है. Yes, sir. Yes, sir. आने वाले Yes, समय sir. में आने वाले समय में दो लोगों के बीच में कंपटीशन होने वाला है एकेडमिक्स में. अभी आपको मालूम है कि जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो डॉक्टर हैं,
जो टीचर्स हैं सबसे अधिक खतरे में इन लोगों की जॉब आने वाली है। आपको मालूम है क्या आप अवतार के बारे में जानते हैं? डू यू नो अवतार? एआई की अगर जो लोग जानते हैं, डू यू नो अवतार? मेरे ही तरह जो मुझे आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन में, मैं चाहूं तो मैं अपने घर में आराम से सोऊंगा और मेरी आवाज में मेरे चेहरे से एक बंदा यहाँ लेक्चर दे देगा कि प्रेजेंटेशन। ऐसे में 3-4 अवतार क्रिएट कर दूंगा और जहां जहां जरूरत पड़ेगी एक समय में उपस्थित हो जाऊंगा मैं। आपको इसके बारे में जानकारी है? आपने कोई ऐसा रील देखा है जिसमें मैं ही जैसे मेरा जो चेहरा है, मेरी जो आवाज है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रेन कर दूंगा। एक मेरा एक वर्चुअल बंदा जो है वो क्रिएट हो जाएगा और वो बात करेगा। इलेक्शन के दौरान देखा है सर, इलेक्शन हाँ, में। अभी वो टीचिंग में भी आ गया है। अभी मेरा यस। एक मेरा फ्रेंड है कंप्यूटर साइंस का, उसने 2-3 अवतार क्रिएट किया है और उसका वीडियो भी बहुत सारा मैं देखा हूँ। वो जाके प्रेजेंटेशन दे देगा, मैं वो प्रेजेंटेशन बना भी लेगा, उसको मैं अगर कर दूं तो। आने वाले टाइम में फ्रेंड 2 लोगों के बीच में कंपटीशन है टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए। और आपको मैं यही बता दूं कि जो हम पीपीटीज बनाते हैं, जो हम मूवीज बनाते हैं, हमसे बेटर एआई क्रिएट कर सकता है। आप लोग देखेंगे अगर मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करूंगा, जैसे ये देख रहे हैं, पहले ये स्लाइड बनाना इतना आसान नहीं था। ये आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको, ये सब मैंने एआई से हेल्प लेके बनाया है इस तरीके के प्रेजेंटेशन को। आने वाले टाइम में अवतार भी क्रिएट करके और फिर ये पढ़ा देंगे। मैं यहां बोलना चाहता हूं, जो आई एम कमिंग टू द पॉइंट दैट इफ यू आर ए टीचर, सो इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप खाली एंशिएंट पढ़ो। दोनों की अच्छी ब्लेंडिंग, दोनों की अच्छी ब्लेंडिंग हो, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न जो है। तो एआई जो है, आने वाले टाइम के जो कंपटीटर्स हैं वो लोग हैं जिनको एआई आता है, जिनको एआई नहीं आता है। खतरा एआई नहीं है, एआई इज नॉट डेंजर, मतलब वो एक तरीके से थ्रेट नहीं है। थ्रेट क्या है? नहीं आना। तो वो लोग जिनको एआई आता है, वो उन लोगों की जॉब के लिए खतरा है जिनको एआई नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि आपको एआई सीखना चाहिए फॉर enriching yourself, for upgrading yourself, for making your presentation more engaging and more you can say valuable। तो जैसे क्या देखिए, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं, 90s में जब कंप्यूटर्स आया तो टाइपराइटर्स रिप्लेस हो गए। यू माइट बी एग्रीइंग इन ऑन दैट। तो उसके 10 साल बाद 1990 के बाद 2000 में इंटरनेट आया। आप सभी लोगों में से जितने लोग बैठे हैं, लगभग 2000 के बाद ही जो है ईमेल क्रिएट करना, भेजना, ये सब काम कर रहे होंगे, मतलब अंदाजा लगा रहा हूं, नियर अबाउट 2000। ठीक है, उसके बाद 10 इयर्स के बाद आया फर्स्ट कंप्यूटर्स, सेकंड इंटरनेट, थर्ड जो हम देखते हैं जो डेवलपमेंट होता है लगभग 2020 का, ये देखते होंगे आप, जो कोरोना आया था, ये जूम प्लेटफॉर्म और जो गूगल मीट है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 2015 में इन प्लेटफॉर्म्स पे 2020 तक नहीं रहे होंगे या 2018 तक नहीं रहे होंगे। आज की डेट में हाइब्रिड मेथड चल रहा है जिसमें इसको हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। फ्यूचर फ्रेंड्स, फ्यूचर इज ऑफ एआई। एआई आपको सीखना चाहिए और एआई को अगर आप जानते हैं तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे अच्छा काम कर सकते हैं। तो डोंट अवॉइड इट, ट्राई टू लर्न। स्किल्स को अपने अपग्रेड करना चाहिए। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ये टीचर के लिए बहुत जरूरी है। सो ट्रांसलेशन इनिशिएटिव्स फॉर मेकिंग एंशिएंट टेक्स्ट ग्लोबली एक्सेसिबल, तो मैंने बताया आपको अनुवादिनी टूल ऑफ आईसीटी